Good evening to all of you. आज हमें डिस्कस करिबा बोट एंड स्ट्रीम। Am I audible? अच्छा, आज हमें डिस्कस करिबा बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड ऑफ वाटर बा हमें कोन कहि परिबा ना करंट बा स्ट्रीम। स्पीड ऑफ वाटर करंट स्ट्रीम लेट हमको देई छी लेट 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट in still water let 12 kilometer per hour. Speed of boat is always greater than speed of water. Speed of boat is always greater than speed of water. Speed of boat is always greater than speed of water. अच्छा, जदि हमको ये दुटा क्वेश्चन जना अछि हमको मिलिबो कोन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अच्छा, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कोन होबो? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का हम कोन कहि परिबा ना विथ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कोन होबो विथ द स्ट्रीम इजी होबो डाउनस्ट्रीम जीवा पे इजी होबो तमे दीटा वैल्यू को ऐड कर दबा। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर मींस 12 plus 4 that is equal to 16 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अच्छा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कोन होबो? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कोन कहि परिबा against the stream 12 minus 4 8 किलोमीटर पर आवर। तो बस हमको ये चारोटे ही जिनस देखा मिल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। चक्कर के डाउट वॉइस क्लियर होउची? एबे क्लियर सुना जाउची? देखो तुमर कोन प्रॉब्लम थिबो, क्लियर सुना जाउनी तुमर कोन प्रॉब्लम थिबो देखो।
अच्छा हमको बोटम स्ट्रीम रे एई चारोटी ही जिंस देखा मिलिबा। अच्छा जदि हमको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जଣା अछि लेट 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर यदि हमको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जଣା अछि क्वेश्चन रे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जଣା अछि तो हमको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर speed of boat in still water is downstream minus upstream divided by 2 downstream minus upstream divided by 2 अच्छा डाउनस्ट्रीम हमर केते अछि 16 अपस्ट्रीम हमर केते अछि 8 तो 16 minus 8 divide sorry speed of boat पछि speed of boat in still water is plus downstream plus upstream divided by 2 downstream plus upstream divided by 2 16 plus 8 divided by 2 that is equal to 12 kilometer per hour तो जदि हमर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम देथिबो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम देथिबो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम फाइंड आउट करि परिबा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अच्छा स्पीड ऑफ करंट भी हमें फाइंड आउट करि परिबा स्पीड ऑफ करंट केते होबो स्पीड ऑफ वाटर केते होबो स्पीड ऑफ वाटर इज डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 बोट रो स्पीड आज कंपेयर टू वाटर स्पीड अधिका थाए तेणुकर एटा माइनस कले कम वैल्यू मिलिबो स्पीड ऑफ वाटर इज डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 16 minus 8 by 2 that is equal to 4 kilometer per hour बस हमको ये चारिटा ही जिनस बोट स्ट्रीम रे यूज रे आसीबो बस हमरा हमें यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करिबा नेक्स्ट हमर यूज रे कोन आसीबो ना एवरेज स्पीड कोन लेट हम डिस्कस करिथिली लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम AB is equal to BC AB रो डिस्टेंस लेट x किलोमीटर पर आवर BC रो डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर तो पूरा जर्नी रो एवरेज स्पीड कोन हो जिवो फ्रॉम A to C पूरा जर्नी रो एवरेज स्पीड कोन हो जिवो ना 2xy by x plus y 2xy by x plus y डिस्टेंस जेतोले सेम थिबो हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम केस रे भी हमें यूज करि परिबा बुझियला ना डाउट अछि को लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमको कौन कौन डाटा देछि कौन फाइंड आउट करिया पई कहिछि
अच्छा रंजिता बेहरा पे क्वेश्चन विजिबल हला देखो एथरा हमको कौन कौन डाटा डाटा देइची स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ मैन इन 3 किलोमीटर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 3 किलोमीटर पर आवर आउ कौन देइची ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी स्पीड सेम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एटा हम क्वेश्चन में गिवन देइछि से कहै केते टाइम लागिवो 10 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम और बैक 10 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जदी ऑफ स्ट्रीम 10 किलोमीटर आछि त बैक टा कोन हबो ना डाउन स्ट्रीम तो से पचारुछि केते टाइम लागिवो अच्छा टाइम इक्वल टू कोन ना डिस्टेंस बाय स्पीड अच्छा टाइम हमें डाउनस्ट्रीम रो बाहर करिवा अच्छा डाउनस्ट्रीम रो स्पीड केते होबो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम तुमको स्पीड ऑफ मैन जणा अछि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जणा अछि डाउनस्ट्रीम स्पीड केते होबो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कौन हुए ना स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 plus 2 that is equal to 5 किलोमीटर पर आवर अच्छा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते होबो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 3 minus 2 that is equal to 1 किलोमीटर पर आवर आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट हमें डाउनस्ट्रीम रो टाइम बाहर करबा डाउनस्ट्रीम से केते टाइम रे फिल अप करिछ अच्छा डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस केते अछि 10 और डाउनस्ट्रीम रो स्पीड केते अछि 5 तो तब केते टाइम लागिवो ना 2 आवर अच्छा टाइम अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम रो भी डिस्टेंस 10 और अपस्ट्रीम रो टाइम केते लागुची 1 तो केते टाइम लागिवो 10 आवर तो टोटल टाइम केते लागुची ताको ना 12 आवर डाउट या क्लियर अच्छा बुझीला ना डाउट अछि रंजिता बेहरा क्वेश्चन देखा जाउची बुझीबोल अछि एबे क्वेश्चन क्लियर देखा जाउची कोन डाउट अछि हमको क्वेश्चन ने कोन देइथिला स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर केते देइची 3 किलोमीटर पर आवर आउ कोन देइची ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी देइची 2 किलोमीटर पर आवर जदी हमको ए दिटा देइची तले हमको मिलिबो कोन ना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आउ कोन मिलिबो ना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम मिलिबो आउ कोन मिलिबो ना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम केमती मिलिबो ना स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 plus 2 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते होबो स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 minus 2 that is 1 किलोमीटर पर आवर हमको डाउनस्ट्रीम रो स्पीड मिली गला डाउनस्ट्रीम रे एते की स्पीड रे जिवो डाउनस्ट्रीम रो स्पीड केते 5 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम रो अपस्ट्रीम रो स्पीड केते 1 किलोमीटर पर आवर से कौन क्वेश्चन पचार जी द टाइम टेकन बाय हिम टू swim to a place 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक से कहूची कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम आउ ता बैक को जिया पई से केते टाइम नबो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जिया पई केते टाइम नबो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम जिबा पई डिस्टेंस हला अपस्ट्रीम रो डिस्टेंस केते 10 और अपस्ट्रीम रो स्पीड तमे बाहर करथिलो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते थिला 1 तो डिवाइड कलो 10 by 1 10 आवर टाइम केते मिलला अपस्ट्रीम रो टाइम केते मिलला
ना 10 घंटा रे तमे अपस्ट्रीम डिस्टेंस को कवर अप करिचो अपस्ट्रीम रो डिस्टेंस स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम रो स्पीड हला 1 किलोमीटर पर आवर तमे केते टाइम रे फिल अप करिचो ना 10 आवर आउ सेमिति डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रो बैक कोन अपस्ट्रीम रो बैक कोन डाउनस्ट्रीम रो स्पीड केते अछि ना 5 किलोमीटर पर आवर तो डाउनस्ट्रीम टाइम केते लागिवो टाइम इक्वल टू सेम डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस भी सेम 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट मींस 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम रो स्पीड हला 5 ताले डाउनस्ट्रीम जिया पे केते टाइम लागिवो 2 आवर तो पचारिछि टोटल टाइम तो अपस्ट्रीम जिया पे 10 आवर आउ तार बैक हला डाउनस्ट्रीम जिया पे 2 आवर दैट मींस टोटल 12 आवर टू कंप्लीट डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डाउट क्लियर हैला ना डाउट अछि रंजिता बेहरा बुझिएला फर्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 A boat running downstream covers a distance of 20 kilometer in 2 hours. Because a boat running downstream covers a distance of 20 kilometer in 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours then speed of boat in still water. Solve this question, question number 2. A boat running downstream covers downstream रो distance केते अछि डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस केते अछि 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर अच्छा डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जिया पे केते घंटा टाइम नेछ 2 आवर ताले तार स्पीड केते थिबो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस हला 20 और टाइम हला 2 तो स्पीड केते थिबो 10 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर बुझिएला ना डाउट अछि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम केते हिजिवो 10 किलोमीटर पर आवर अच्छा नेक्स्ट कोन देइछि क्वेश्चन रे व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम in 5 hours same distance upstream that means
Upstream, distance same. That means distance is 20 kilometer, but time 5 power. Speed equal to distance by time. Speed, upstream speed 20 by 5, that is equal to 4 kilometer per hour. Speed of downstream 10 kilometer per hour. Speed of downstream 10 kilometer per hour. Speed of upstream 4 kilometer per hour. Speed of boat in still water. Find speed of boat in still water. अच्छा जदि speed of downstream 10 kilometer per hour, speed of upstream 4 kilometer per hour, तो speed of boat in still water कौन हुए? Formula कौन? Speed of boat in still water downstream plus upstream divided by 2. Downstream, speed of downstream 10 plus 4 divided by 2, that is equal to 7 kilometer per hour. बुझीगला ना? डाउट अच्छी? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर या डाउट? Very good. Next question number 3. Solve this question.
6 स्पीड ऑफ स्ट्रीम पचारिछि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पचारिछि A boat rose 1 kilometer in 5 minutes along the stream. Along the stream. Along the stream means downstream. Downstream 1 kilometer in 5 minutes. 5 minutes 1 kilometer. 6 kilometer in 1 hour against the stream. Against the stream means upstream. Against the stream means upstream. तो हमें टाइम टा को सेम करो. फर्स्ट थिंग तुम टाइम टा को सेम करो. देखो अपस्ट्रीम तुम जानिचो 1 आवर रे 6 किलोमीटर. बट डाउनस्ट्रीम रे तुम मिनिट रे जानिचो 5 मिनिट रे 1 किलोमीटर. सेटा को 1 आवर रे कन्वर्ट करो. जे तुम 5 मिनिट रे 1 किलोमीटर जाउचो 5 मिनिट रे तुम 1 किलोमीटर जाउचो तो 60 मिनिट रे केते किलोमीटर जीवो. अच्छा 5 रे 12 मल्टीप्लाई कले 60 तो राइट हैंड साइड रे भी 12 जदि मल्टीप्लाई करिवो ताहले आसीबो 12 किलोमीटर. ताहले जे तुमे 5 मिनिट रे 1 किलोमीटर जाउछो 60 मिनिट रे डेफिनेटली 12 किलोमीटर जीवो. आउ तमरो स्पीड हे गला डाउनस्ट्रीम रो स्पीड हे गला स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर. गोटे घंटा रे तमे 12 किलोमीटर जाउछो. 1 आवर रे 1 आवर 60 मिनिट 12 किलोमीटर मींस तमरो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हे गला 12 किलोमीटर पर आवर. सेमिति अगेंस्ट द स्ट्रीम तमे 1 आवर रे केते जाउछो ना 6 किलोमीटर. तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते हे जीवो. स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर. अब पचारिछि स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्वेश्चन नंबर 3 बुझी हला ना डाउट अछि. केता हो आंसर स्पीड ऑफ स्ट्रीम. Write down the answer of this question in chat box. अरे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जणा अछि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जणा अछि स्पीड ऑफ स्ट्रीम केता होबो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. स्पीड ऑफ स्ट्रीम केता होबो स्पीड ऑफ स्ट्रीम केमते मिले स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. डाउनस्ट्रीम रो स्पीड हला 12 किलोमीटर पर आवर
अपस्ट्रीम रो स्पीड हला 6 12 माइनस 6 3 किलोमीटर पर आवर और केते एते टाइम कोन लागु सॉल्व करिया पे बुझी होची ना डाउट अछि ना बुझी होनी किछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to starting point in 3 hours. Downstream जाउची पुणी बैक करूची टाइम नउची 3 आवर डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम टाइम टोटल टाइम 3 आवर नउची डाउनस्ट्रीम रो अपस्ट्रीम रो डिस्टेंस को कवर अप करियो तो कहै स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट तुमको दे दीची स्पीड ऑफ वाटर तुमको दे दीची 3 किलोमीटर पर आवर और पचार स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और टोटल डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 12 किलोमीटर सेम अपस्ट्रीम डिस्टेंस 12 किलोमीटर मीन्स 24 किलोमीटर को से 3 आवर रे कवर करिछि सॉल्व होई परिबो देखो एटा ऑप्शन पकई करिवा ऑप्शन यूज करिवा आंसर इज योर 9 आंसर इज योर 9 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to 9 kilometer per hour. Speed of water 3 kilometer per hour. Speed of boat in still water 9 kilometer per hour. तो speed of downstream कितना होगा? Speed of downstream 9 plus 3 12 kilometer per hour. Speed of upstream कितना होगा? 9 minus 3 6 kilometer per hour. अच्छा डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस अछि 12 तार केते टाइम लागिवो डाउनस्ट्रीम केते टाइम लागिवो कवर अप करिया पई डाउनस्ट्रीम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस हला 12 डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस हला 12 डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस हला 12 और डाउनस्ट्रीम रो स्पीड केते अछि 12 ताले डाउनस्ट्रीम जिया पे केते घंटा लागिवो ताको 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जिया पे केते घंटा लागिवो 1 आवर सेमिति अपस्ट्रीम रो टाइम बाहर करिवा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड
अपस्ट्रीम रो डिस्टेंस 12 सेम 12 अपस्ट्रीम रो स्पीड केते अछि 6 आवर 12 डिवाइडेड बाय 6 2 आवर दैट मींस 3 आवर रे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को से फिल अप करूची तो आंसर कोन हे जीवो 9 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऑप्शन पुट करके आंसर मु फाइंड आउट कली बुझी हला ना डाउट अछि क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 solve this question number 5 solve वाला क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटिव स्पीड हमें एटा एमते गोटे हमें ए टाइप रो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन रे भी करथिले ए टाइप रो क्वेश्चन अच्छा क्लास करबा को रिवीजन करी आसना नहीं
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, two boats A and B. A and B starts towards each other from two places. From two places 108 kilometer apart. Dita place ଭିତରେ distance କେତେ ଅଛି? 108 kilometer. Dita place ଭିତରେ distance କେତେ ଅଛି? 108 kilometer. Speed of boat in still water is 12 kilometer and 15 kilometer per hour. अच्छा, A ର speed, boat A ର speed, boat A ର speed ତମର କେତେ ଅଛି? boat A ର speed 12 kilometer per hour और बोट बी ର स्पीड केते अछि ना 15 किलोमीटर पर आवर. बोट बी ର स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर. तो से कहि जे इफ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, जो से अपोजिट डायरेक्शन आछुन दीटा देखो बोट अपोजिट डायरेक्शन में आछुन दी, तो से पचारि जे केते टाइम पर से माने टाइम इक्वल टू कोन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस केते अछि दीटा दीटा बोट भितरे डिस्टेंस केते अछि? दीटा बोट भितरे हमर डिस्टेंस अछि 108 और दीटा बोट अपोजिट डायरेक्शन आछुन. अपोजिट डायरेक्शन आसीबे तो रिलेटिव स्पीड कोन हे जिवो? ऐड हे जिवो. तो 15 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 27. तो केते घंटा रे मीट करिवे, केते घंटा रे से माने क्रॉस करिवे ना 4 आवर परे से माने क्रॉस करिवे. 4 आवर परे से माने क्रॉस करिवे. बुझी हला ना? डाउट अछि? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर या डाउट? रंजिता बेहरा एंड सुमन मुंडा, क्लियर या डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Solve this question, question number 6.
रंजिता बेरा इधर डिस्टेंस पचारे जे डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज 4 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज 4 किलोमीटर क्वेश्चन बुझी होची ना क्वेश्चन बुझी न व्हाट इज 4 किलोमीटर पर आवर इट तो पचारे जे डिस्टेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर देची स्पीड ऑफ वाटर देची और पचारिची डिस्टेंस केते हबो जदी से 2 घंटा रो डाउन माने डाउनस्ट्रीम एंड बैक माने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जीवा पे जैसे टोटल 2 घंटा टाइम नेची से बोटटा ताले से पचारिची फाइंड द डिस्टेंस पचारिची हमको क्वेश्चन रे कोन देची स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर केते देची 8 किलोमीटर पर आवर आउ कोन देची स्पीड ऑफ वाटर 2 किलोमीटर पर आवर अच्छा जदि हमको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर जना अछि हमको कोन मिलिबो स्पीड ऑफ बोट जना अछि इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ वाटर जना अछि हमको कोन मिलिबो ना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम केते जीवो 10 किलोमीटर पर आवर ऐड करिवा डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते जीवो 8 माइनस 2 6 किलोमीटर पर आवर तो से पचारी जी डिस्टेंस केते फाइंड डिस्टेंस से डाउनस्ट्रीम जाउची 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम जाउची स्पीड हला डाउनस्ट्रीम रो 10 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड आसुची अपस्ट्रीम रो स्पीड हला अपस्ट्रीम रो स्पीड हला 6 किलोमीटर पर आवर तो जेतिकी डिस्टेंस कवर करूची जेतिकी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कवर करूची पुणी सेतिकी डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी कवर करूची जेतिकी डिस्टेंस से डाउनस्ट्रीम रे कवर करूची सेम डिस्टेंस से अपस्ट्रीम रे भी कवर करूची तो डिस्टेंस सेम अछि बट जेतबेले से डाउनस्ट्रीम जाउची तार स्पीड केते अछि 10 किलोमीटर पर आवर जेतबेले से डाउनस्ट्रीम जाउची 10 किलोमीटर पर आवर आ जेतबेले से अपस्ट्रीम आसुची 6 किलोमीटर पर आवर तो डिस्टेंस सेम अछि एवरेज स्पीड रो फार्मूला में यूज करि परिबा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y तो डाउनस्ट्रीम जाइची 10 आउ डाउनस्ट्रीम जेतिकी डिस्टेंस कवर करिची सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी कवर करिची 2 into 10 into 6 divided by 10 plus 6 that means 16 तो এটা कैंसल आउट करले 3 4 2 5 that means 7.5 average speed is your 7.5 kilometer per hour डाउनस्ट्रीम थिला 10 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम तार स्पीड थिला 6 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बोथ रो तुमको मिलिला केते ना 7.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड और से पचारिची डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइंड द डिस्टेंस पचारिची डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रो डिस्टेंस केते इज स्पीड इनटू टाइम अच्छा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम रो स्पीड एवरेज स्पीड केते मिलिची 7.5 और से केते टाइम रे फिलअप करिथिला 2 आवर रो डाउन एंड बैक 2 आवर रे फिलअप करिथिला तो टोटल डिस्टेंस से केते कवर करिथिबो 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस माने डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम टोटल डिस्टेंस इज योर 15 किलोमीटर से पचारिची फाइंड द डिस्टेंस तो तमरो आंसर केते हिजिबो आंसर केते हिजिबो ना 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर यदि पचार था फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम तो केते हितांता ना 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज योर 15 किलोमीटर बुझी हला ना डाउट अछि को हमें खाली अप्लाई करूचंती जहां पे हमें
पढ़ी कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ी जस्ट आम क्वेश्चन रे अप्लाई करूँ ए सब भी आम प्रीवियस क्वेश्चन रे प्रीवियस क्लास रे भी आम डिस्कस करथिले ए टाइप रो क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऊपर क्वेश्चन आम डिस्कस करथिले बुझी हला ना डाउट अछि क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर या डाउट solve this question number 7 solve hela question स्पीड ऑफ मैन केते देछि 5 किलोमीटर पर आवर अच्छा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम केते हे जिवो
स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन तुमको जना अछि क्वेश्चन रे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जना अछि 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम केते जीवो 6 किलोमीटर पर आवर अच्छा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते जीवो अपस्ट्रीम रो स्पीड केते मिलिबो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम केते जीवो ना 5 माइनस 1 4 किलोमीटर पर आवर तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रो डिस्टेंस सेम एवरेज स्पीड केते जीवो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रो एवरेज स्पीड केते जीवो 2 into 6 into 4 divided by 10 that is equal to 5 5 पे आओ कैंसिल आउट होबोनी 24 by 5 24 by 5 24 by 5 distance equal to कौन है ना speed into time distance is your distance is your distance speed into time speed is your 24 by 5 24 by 5 ଆଉ time କେତେ ନେଇଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେ time କେତେ ନେଇଛି 1 hour ଯିବା ଆସିବାରେ time କେତେ ନେଇଛି 1 hour means କେତେ time ଲାଗି କେତେ distance ହବ 24 by 4 24 by 5 means 2.8 kilometer divided by 2 that is equal to तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम मिसे केला 2.8 किलोमीटर तो हाउ फार इज द प्लेस दैट मींस 1.4 किलोमीटर आंसर हबो 1.4 किलोमीटर बुझी हला ना डाउट अछि को लास्ट क्वेश्चन अच्छा 2.8 है कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक अछि सॉरी 24 by 5 24 by 5 24 by 5 that is equal to 4.8 kilometer downstream plus upstream 4.8 4.8 divided by 2 4.8 divided by 2 that is equal to 2.4 kilometer 2.4 kilometer the answer of this question is 2.4 kilometer same question previous question number 6 question number 7 same बस सॉल्व करि परनो ठीक अछि ओके ऑल ऑफ यू गुड बाय नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिबा न्यू टॉपिक हमें डिस्कस कले स्पीड टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक डिस्कस करिबा ठीक अछि ऑल ऑफ यू गुड बाय टॉपिक अच्छा कौन डिस्कस करिबा को नेक्स्ट क्लास को टॉपिक डिस्कस करिबा को टॉपिक हमें डिस्कस करि नाहंती DI is not possible because mobile the ठीक अछि ओके आई एम ट्राइंग DI क्लास करिबा उठे नेक्स्ट क्लास देखु छी मु कोन क्लास करिबा ओके ठीक अछि